वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। बम्बई की जब भी बात आती है ना तो मेरे मन में एक ही फीलिंग आती है, बम्बई मेरी जान वाली। और बम्बई मेरे लिए एक इमोशन है ना, वो सबके लिए मुझे लगता है जो भी बम्बई से इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, सबके लिए एक इमोशन जैसा है। आज इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द क्रिएटर मीन्स द क्रिएटिव फोर्स बिहाइंड बम्बई मेरी जान, जो OTT प्लेटफॉर्म पे आपको 14 सितंबर को देखने को मिलेगी। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेंसिल डिसिल्वा हु इज विद अस राइट नाउ। और एक ऐसे शख्स हैं हमारे साथ जो आजकल OTT पर हर जगह हमको दिखते हैं, ओमनी प्रेजेंट है वो। यस, यहाँ पर भी है इस वक्त हमारे साथ। मिस्टर अविनाश तिवारी हु इज विद अस राइट नाउ। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप? थैंक यू। सो अविनाश, मेरा पहला सवाल आपसे, मतलब जैसे मैंने कहा आप ओमनी प्रेजेंट हो, यहाँ भी हो, काला में भी आप हो, इधर भी आप हो, उधर भी आप हो, सब जगह दिखते हो आप। तो रियल लाइफ में आप कैसे हैं और रियल लाइफ में कैसे हैं, ये आप बताइए प्लीज। देखिए, रियल लाइफ में मैं अभी किसी से मजाक कर रहा था कि यार यहाँ पे तो मैं बम्बई का नया बादशाह हूँ। हाँ। और सच्चाई है कि मैं अपना घर ढूंढ रहा हूँ इस वक्त, कहीं बम्बई में मुझे रहने के लिए घर मिल जाए। हाँ। तो ये है रियल और रियल लाइफ का फर्क। हाँ, रेंसिल क्या कहेंगे इसके बारे में? ये सीरीज करने के बाद घर क्या मतलब बंगला मिल जाएगा? I mean, you're on a hit trail, dude. I hope so. I hope so. अच्छा रेंसिल, since this is inspired from the book, if I'm not wrong, No, really, it's Dubai? not inspired by the book, and I think we just said it in the other interview also. Hussain Saab has done quite a lot of crime journalism, and we all know him. He's possibly among the top writers in crime journalism. So I think automatically people think, that this is based on some of his books. But the truth is, he gave us the storyline. He gave us the playing field, and from there Shujat and I developed it. It's basically a story. I think it's a father-son relationship. Yes. It's seen through the lens of their fractured relationship. Father is a law enforcement, he's a cop, and the son goes astray and starts charting out his own career in the underworld. And through this relationship, we see 4 decades really. Of post-independence India, 50s, 60s, 70s, and we end in the 80s. And we see how organized crime grew in that time and what it is, by the time the season ends in the 80s. It starts from the streets of Mumbai where people were just, extorting money from mill workers after independence. In the 70s, there was the gold smuggling, and in the 80s, it, went into drug money and whatever. So we are actually using his research, his journalistic research, and creating this whole fictional world by which we can, do season 1 and hopefully season 2 and 3. Avinash, lately we have seen कि you are getting characters like जो करना चाहते हैं लोग कि अरे हमें ऐसा कैरेक्टर मिल जाए, तो वो ड्रीम कैरेक्टर्स जो होते हैं, तो ये one of that characters था आपके लिए? Absolutely, ये किरदार ऐसा है। मैं मजाक में ये भी कहता हूँ कि जितने एक्टर्स फ्रेंड्स हैं मेरे, वो सब मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं इस बारे में। जेलस हैं, ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि अगर उनके पास होता तो मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही होती। बट आई एम जस्ट यही कह सकता हूँ कि आप हीरे होगे, चमकोगे तभी जब रोशनी तुम पर पड़ेगी, और शायद रोशनी अब पड़ना शुरू हो गई। और अविनाश तो ऐसा हीरा होगा यहाँ भी इंडस्ट्री के लिए, वो जिसको कहते हैं ना हीरा है सदा के लिए। आई होप आपकी बात सही निकले। अच्छा, वी हैव सीन दैट इन द ट्रेलर ऑल्सो, और जितना मैंने ऑब्जर्व किया ट्रेलर को देखने के बाद, देयर आर ट्रांजिशंस इन योर कैरेक्टर, द लेयर्स इन योर कैरेक्टर. सो हाउ चैलेंजिंग वाज दैट फॉर यू टू गो डीप इनटू योर कैरेक्टर एंड प्रिपेयर फॉर योर कैरेक्टर एज अ डॉन, फ्रॉम बीइंग अ नोटोरियस किड, फ्रॉम बीइंग द डॉन ऑफ बम्बई? Actually, this whole filming has taken about 3.5 years. So I'm saying right from the physical preparations that was needed, because I for some reason chose to gain weight for it. And did you really? I had 40 inches waist, which is almost 8 inches, 6 to 8 inches more than my normal. Oh बाप रे, उसके लिए तो बहुत खाना भी पड़ता होगा. That is a blessing in disguise for an actor, I think. I don't know because if you stay with that for 3 to 4 years, your body is no more the same. Yes. So which is what I feel now. So there is a price that you pay for what you love. But ये तो बाहरी बात हो गई. मूंछ बढ़ा ली मैंने, शरीर बढ़ा लिया. But I also remember that I think 15 दिन ही हुए थे, और शुजात सर ने ही इंश्योर्ड कि जो कपड़े मैं पहन रहा हूँ, मेरे पास वो कपड़े भेज दिए गए, और मैंने उसके बाद से वो कपड़े पहनने शुरू कर दिए. और देन वी हैड रीडिंग्स,
और पता नहीं चला, मुझे एक्चुअली नहीं पता चला कि कब वो 15 दिन के बाद से वो होते 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 ये आप इसमें बन गए। इसलिए मैं ये कहूँ कि मैंने ये स्पेसिफिकली किया है। आई रियली कांट पिन पॉइंट कि कब कहाँ ये परिवर्तन आया, कब कहाँ बदलाव आया। द होल प्रोसेस वाज सो ऑर्गेनिक। और फिर जब शूटिंग होके रुक गई तो मेरे पास एक बीच में ख्याल था कि क्या मैं छोड़ दूँ, क्या मैं पकड़े रहूँ इस चीज़ को, क्योंकि शूटिंग कोविड ख़त्म हो गया, कोई और काम कर लूँ। बट ये सोचना कि वापस वज़न घटाकर वापस गेन कर पाना इस तरह से ये शायद पॉसिबल नहीं होगा। एंड देयर वाज फेथ दैट दिस विल प्रॉब्ली टेक ऑफ। In the second year of COVID, our set got broken away. I still remember getting a call from my director, or I really had a breakdown because you had invested 2.5 years with all of this, and suddenly it seemed like there's a dark tunnel in front of you and there's nothing that's going to happen. Until a month later, I got a call that, oh, we might start from October, November again. So it's been a lot of ups and downs with this. उसमें ये कब किस तरीके से ये बारीकियां अंदर आ गई, ये मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। आई वुड लाइक टू क्रेडिट द राइटिंग, द रिहर्सल्स दैट वी डिड। ये एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इस बीच में हमने बहुत बार स्क्रिप्ट रीडिंग की। अच्छा। और होता है कि आप 10 एपिसोड हैं, करीबन 10 घंटे का कंटेंट होगा, तो अगर आप उतना पढ़ रहे हैं तो एक बार आपको ये सीरीज़ पढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है। सो नॉर्मली 1 से 2 बार अगर आपने पढ़ लिया उसके बाद वापस पढ़ने की इच्छा नहीं होती। बट इस स्क्रिप्ट के बारे में ज़रूर कह सकता हूँ, हम जितने एक्टर्स हैं हमने करीबन 8 से 10 बार पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है। और जितनी बार पढ़ी है उतनी बार उतने एक्साइटमेंट में, उतने जोश के साथ पढ़ी है। सो दैट वाज समथिंग दैट टोल्ड यू दैट दिस वाज समथिंग स्पेशल। एंड आई होप व्हेन पीपल सी इट दे रियलाइज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इट इज़ समथिंग स्पेशल. I truly believe it has the capacity, the opportunity to really break through and create a doorway for Indian content to the world. Two things I want to ask from you, Renzel, is that firstly कि actors में से उनका best निकालना is one thing that creator has to be sure about, and we have seen you bringing out the best out of your actors. And secondly, to create Bambai, मुझे बम्बई बोलना ही हमेशा अच्छा लगता है। I don't call it Bombay, I don't call it Mumbai because I love calling it Bambai. उस एरा का बम्बई क्रिएट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज ऑफ कोर्स आपके लिए होगा, वही पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में कि लोगों को भी उस पर विश्वास हो जाए। सो वो कितना मुश्किल था और उसको कैसे ओवरकम किया? See, we quickly realized that this Bombay that we are talking about doesn't exist. ये आपको कहीं नहीं मिलेगा. You can go from, and so Shujat and I actually did this. We went from Baikla and we started thinking backwards to Kolaba because that was where Bombay was. It started, moving in a line down. वो Bombay नहीं रहा अभी. It's which is why, yes, we did a lot of research in the writing and all. But the big thing I think that really makes this show work was that Amazon and I think Excel, Ritesh, Farhan and all actually gave us the money, the financial thing to build this city, which we made in Mud Island. Of course, it came down because of the typhoon one time and we lost the land because of COVID. But if you had ever visited that set, you would have seen that it had everything made to that production detail of that time. So it had everything. It had a mosque, it had a slaughterhouse, it had the chawls, it had everything that you could film in one location with that level of detail. And that is why I'm saying, when people see this, they will see the scale. You don't see it, you see it in the trailer, but you don't understand what the scale is for a show till you see these episodes. Absolutely. And was Avinash your first choice? For the Avinash quickly became our favorite choice. In fact, I don't think we chose anyone else. I think it was only Avinash. And I claimed it first. Yeah. उसके बाद थोड़े दावेदार आ गए. अच्छा. But शायद मेरी दावेदारी टिकी रह गई. That's all. Yeah, I must say it's true. He claimed it. He claimed it because when you cast, I think you start saying, हाँ, okay, वो मतलब last 3 में these are the last 3. But there were no last 3 for him. For Dara, I think he had claimed it. I don't know how he claimed it. I think with that mustache or there was something. No, there was no mustache. I just walked in. I said, "ये मेरा है." I swear to God, this is truth. And I don't know why I read it and I just felt like. क्या बात है? हाँ, really. Now when you're asking, ऐसा ही हुआ. There was, I can't remember anyone. I still have a clear memory. 8th Feb 2019 is when I tested for it. अच्छा.
ये बड़े 2023 man. थैंक यू So I wrote it in 18. अच्छा, oh, it's 5 years. From the blank page to years, 5 years. But I remember, you're right. 8th Feb is when I did it because I was leaving for Bulbul. शूटिंग बुलबुल एक दिन पहले इनका टेस्ट बाद में शुरू होने वाला था बट बिकॉज आई वाज लीविंग आई सेड प्लीज़ मुझे एक दिन पहले दे दीजिए तो दे गिव मी अ सीन आई टेस्टेड फॉर इट एंड आई सेड ये मेरा है टेढ़ा है पर मेरा है हाँ जो भी होगा ये वो एक फीलिंग थी कि दिस इज समथिंग दैट वुड आई विल बी एबल टू पुल ऑफ वेरी वेल बट देन उसके बाद 8-9 महीने का सन्नाटा था तो मैंने कहा अच्छा मैंने जोश में कह दिया शायद मेरे लिए नहीं होगा बट दे हैड नॉट लॉक्ड एनीवन सो आई वाज ऑलवेज होपफुल डीप डाउन क्योंकि अंदर से ये फील हो रहा था कि ये मेरे लिए है until finally Shujat sir called and I think they went through a phase of looking Actually, at other the script people. was going through a revision. It was nothing to do with casting. Those months we were doing a draft. And then I got a call saying you're on. Very nice, So I said okay. मतलब वो कहते हैं ना you don't chase, you believe. That's been the ये story मेरा of status भी है. absolutely WhatsApp. story of my professional life definitely. I still remember even with Laila Majnun I had gone and said this कि और बहुत गुड लुकिंग एक्टर्स होंगे मुझसे बहुत बेहतरीन एक्टर्स होंगे ये वाला मेरा है एंड इट हैपेंड समहाउ सो आई कुछ चीज़ें थोड़ी हो जाती हैं बिलीव पे क्योंकि आप शानदारीन एक्टर है ना शानदार और बेहतरीन दोनों क्या बात है अच्छा एक तरफ केके सर और एक तरफ अविनाश प्लेइंग फादर सन्स कैरेक्टर Correct. मुझे देख के ऐसा लगा कि दो भाइयों को देख रही हूँ पहले तो ये डिसीजन किसका था कि केके सर इज देयर एंड No, I think so. In fact, this was something we were talking about in the morning. Shujat and I, in fact, I've been trying to work with KK for many years. It never happened. Shujat has been trying to work with KK. So, and I think KK came in for another role. I can't remember what it was now. And then he asked Haji, and he asked, "के father का role कोई कर रहा है?" And I think Shujat was like, "No, you're thinking and all." And he read it and wanted to do it. वेरी नाइस Yeah. एंड व्हेन यू हैव केके सर लाइक ऑपोजिट यू एक्टिंग तो वो रिस्पेक्ट वाला फैक्टर ज्यादा था फैन स्ट्रक फैक्टर ज्यादा था या फिर काम करने वाला कि मतलब एकदम आई थिंक दोनों का मिश्रण था बिकॉज आई रिमेंबर पृथ्वी थिएटर पे व्हेन 2003-04 ऑफ कोर्स ही वाज ऑलरेडी अ एस्टैब्लिश्ड एक्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बट मैंने अभी थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया था थिएटर पे और उन्हें मैं हमेशा थिएटर में देखता था तो ही वाज सराउंडेड बाय gorgeous women and you would always aspire that कि अरे मेरे भी आसपास I also remember there was an article at that point of time around 2003-04 which said an intelligent woman's man. Oh wow. That also got stuck with me. Absolutely. I mean उन काम के बारे में गुलाल if I keep talking about Gulal I am just a fanboy since that point of time. When I met him we did a reading एंड मैं पृथ्वी पे एक दिन प्ले देखने गया वो वापस दिखे मुझे तो मैं घबरा कर उनसे बात नहीं कर रहा था कि नहीं मैं हाउ कैन आई गो एंड टॉक टू हिम हाउ कैन आई गो एंड टॉक टू हिम सो इट टुक मी दैट लिटिल वाइल टू ओपन अप बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट द स्टोरी एंड द रिलेशनशिप दैट वी शेयर it's dysfunctional it's dysfunctional there is also so much respect fear all those feelings तो जो हल्का हल्का मेरे अंदर था उसको मैंने एम्पलीफाई कर दिया to be able to play this part I mean he's one of the legends of our country as far as acting is concerned and just to be standing in front of him saying my lines and seeing myself in the same frame I'm like you have done well Avinash कुछ तो लायकियत होगी तुम्हारे अंदर भी कि तुम इनके सामने खड़े हो तो ऐसा मैं अपने आप को एक थपथपी दे देता हूँ क्या बात है अच्छा एट द एंड लाइक आई वांट टू आस्क वन थिंग फ्रॉम यू बम्बई मेरी जान मोमेंट के बारे में ऑफ कोर्स जैसे मेरे लिए जब मैं पहली बार बम्बई आई थी तो मैंने पलट के फ्लाइट में बैठने से पहले कहा था कि बम्बई मुझे दोबारा ज़रूर बुलाना और फिर यहीं रख लेना तो बम्बई ने ऐसा किया और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि जब आप इस सिटी से शहर से प्यार करते हो तो पलट के आपसे प्यार करता है सर आपसे शुरू करते हैं सो आपके लिए वो बम्बई मेरी जान वाला मोमेंट कौन सा था एनी एनेक्डोट दैट यू वांट टू शेयर अबाउट बम्बई I don't think I have an anecdote. It's just that I can't go away. You know, my wife gets very angry with me. Why? Because when I leave the city to go to, let's say I go to London or I go to New York and all, after the 4th day I said, everything is clean and all. But the vibe is not there, yaar. Same is the feeling with me. The food is not there. Okay, so whatever it is, I mean, Bombay food is, I think it's just the fact that people, there's always something happening at every street corner. And in your day, you can never get bored. There's not enough time to finish everything. Correct. So people tell me like New York is faster. I say that's all bull, really. I think Bombay is faster. Okay, Bombay is faster and it is. It's an exciting life.
There is some vibe. Yeah, it's a crazy vibe because at 3 in the morning you go on the road, people are there, people are talking, or And you can get that idli sambar you also. can, है ना? you can, and there are, and also like I was just saying it, you can start anything in this city. हाँ. If you just have even the most harebrained idea, the stupidest business plan, Yes. 4 जन तो आपको मिलेंगे. क्या बात. Who say, yeah, you know, this is a good idea, let's do it. Now, whether it succeeds or not, but that level of positivity and optimism is not there in the rest of, or maybe I'm biased, but I just feel it's not there. I don't see it in other cities. Absolutely. Even the people are very supportive. For you, what is that Bambai Meri Jaan moment? I think, I mean, I can owe everything in my life to Mumbai because I remember my father coming here in 81 and when he walked in, he had nothing because train से आ रहे थे और सारी चीज़ें चोरी हो गई. He had to call back home and tell someone, तो उन्होंने किसी से पैसे लेकर फ़ोन किया था घर पे कि you know I've gotten here. He only had a job at that point of time, a government job, but he had no money when he walked in. From that place, to be able to get us education here, to create a family and create a space for me that I could go abroad and study and all of that, it's only happened because of the city, right? It's this place which is so vibrant, which वो बोलते हैं ना कि यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे अगर आप बीज डालेंगे तो यहाँ पे फल उगने ही हैं. That's the beauty of Mumbai, which is why it's one of the densest cities in the world. Sir, शायद इसीलिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा और तेज़ लगता है because it's so dense. It's faster, it's chaotic, and it's still accommodating. It takes everyone in. Yeah, it takes everyone in, and there's nothing really negative. Women are safe. Yeah. You know, like when they say crime, I don't really see it. Maybe there are too many people to commit a crime, but you don't really, like cities of this nature. Absolutely. Absolutely. What is the crime rate really? No, time now is the world starts saying Bambai Meri Jaan. Yes, absolutely. और मैं तो हमेशा से कहती हूँ Mumbai is मेरी जान, Mumbai was मेरी जान, Mumbai will be मेरी जान. Always, always and always. Thank you so much both of you for talking to us on Punjab Kesari. Pleasure. Thank you. And yes, thank you so much to all the viewers for watching us on Punjab Kesari Nowodaya Times. फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए शब्बा खैर.